अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए 9th क्लास की केमिस्ट्री के एमसीक्यूज लेके आए हैं जो कि सॉल्व्ड हैं और ये इंतहाई इम्पोर्टेंट जो है वो एमसीक्यूज हैं बुक में से, फुल बुक में से, जिनको करने से आपके जो है वो पेपर में फुल मार्क्स आ सकते हैं। तो देखते हैं हम इन एमसीक्यूज को। मोलर मास ऑफ द H2SO4 इज, इसका आंसर होगा 98 ग्राम। द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द ग्लूकोज इज CH2O। उसके बाद है पोटाशियम, सल्फर, मैग्नीशियम एंड सोडियम कॉन्स्टिट्यूट ऑफ आवर बॉडी मास। यहाँ डैश है तो डैश में क्या आएगा 0.80%। द वैलेंसी ऑफ द फॉस्फेट रेडिकल इज 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल CO, जिसमें ये आपको नजर आ रहे हैं ना बोल्ड हुए, दैट इज द आंसर। The mass of the one molecule of H2O is 18 AMU. Which of the following pair has same mass, 1 mole of CO and 1 mole of N2? ये इसका आंसर है। The number of naturally occurring element is 92. How many number of moles are equivalent to 8 gram of CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड? तो वो है जी 0.18 मोल। Which one of the following is the empirical formula of benzene? बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला है जी CH। मोस्ट abundant element occurring in oceans are oxygen. Which of the following is not a triatomic molecule? That is H2. The percentage of nitrogen in air is 78%. The molecular mass of the nitric acid is 63 AMU. The symbol of the Avogadro's number is Na. इसका ये आंसर है। नेक्स्ट है जी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H3PO4 इज 98 AMU. एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम इज 20. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन मच अबंडेंस इन अर्थ्स क्रस्ट? दैट इज ऑक्सीजन. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स? मिक्सचर. द एलिमेंट विच अकर्स इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर इज मर्करी. ये इसका आंसर है। यूनिट नंबर 2 से देखते हैं कौन कौन से एमसीक्यूज हैं इम्पोर्टेंट जो कि पेपर में जरूर पूछे जा सकते हैं। विच शेल कंसिस्ट ऑफ 4 सब शेल? इसका आंसर होगा N, यानी N शेल जो है वो ऐसा शेल होता है जिसके अंदर 4 सब शेल्स होते हैं। द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट इज इक्विवेलेंट टू दिस वन, 1 multiplied by 10 raised to power minus 34. The p subshell has 3 orbitals. p subshell में जो है वो 3 orbitals होते हैं। उसके बाद है the p subshell has 3 orbitals. m shell can accommodate 18 electrons. Which shell consists of the 3 subshell? इसका आंसर है जी m. Subshell p can have maximum number of electrons 6. L shell can accommodate 8 electrons. The number of electrons in the valence shell of chlorine is 7. K shell can accommodate 2 electrons. Unit number 3 से है जी number of element in normal periods are 8. The element of group 1 and 2 are called S block. ये इसके आंसर्स हैं जो हाईलाइट हुए हैं। Which of the following halogen has the lowest electronegativity? Iodine है इसका आंसर। The atomic radius of carbon atom is 77 pm. Which element has the lowest electronegativity? लिथियम में जो है वो lowest electronegativity होती है। नेक्स्ट MCQ है the number of element in 6th period is 32. Which one is the shortest period in periodic table? First period का जो है वो shortest period होता है। Modern periodic law is presented by H. Moseley. Group 17 of periodic table belongs to halogens. Modern periodic table has dash period, 7 period. Who discovered atomic number? H. Moseley. Which of the following element is not found in normal periods? That is helium. इसका आंसर है helium. Transition elements are all metals, right? The horizontal row of the element in periodic table are called periods. 6th and 7th period of a long form of periodic table are called very long periods, right? 6th और 7th period जो है लॉन्ग फॉर्म के उसको क्या कहा जाता है? वेरी लॉन्ग पीरियड. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? F, right? The base of the modern periodic table is atomic number. The electronegativity of fluorine is 4, right? The number of the elements present in 3rd period of modern periodic table 8. The number of elements in 4th period is 8. Next है जी ionization energy of sodium is 496 kilojoule.
In period from left to right, which one is decreased? Atomic radius. Atomic radius जो है decrease होता है from left to right. Unit number 4 के जो है MCQs हैं. Which type of force is present in hydrogen bonding? Intermolecular force. How many electrons are involved in the triple covalent bond? 6. 6 is the answer. Which type of the forces are dominant during chemical bond formation? Attractive forces. The type of bond in which bond pair of the electron is united by one bonded atom, that is coordinate covalent bond. Next, which type of the covalent bond present in nitrogen molecule? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में ट्रिपलेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल? दैट इज H2. After gaining one electron, chlorine atom attains the electronic configuration of which noble gas? Argon. Right? Which one is an ionic compound? NaCl is a ionic compound. Which one of the following is a polar molecule? That is H2O. Which of the following is an electron deficient molecule? BF3. Covalent bond involves the sharing of electrons, right? Which one of the following is a polar molecule? That is HCl. A bond pair in covalent molecule usually has 2 electrons. How much energy is required to break a chemical bond in HCl? 430 kilojoule. The bond formed due to the mutual sharing of the electron is called covalent bond. Boiling point of alcohol is 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. द मॉलिक्यूल विच हैज कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा मॉलिक्यूल होता है? N2 होता है. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग इन डबल कोवेलेंट बॉन्ड इज 4. कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं डबल कोवेलेंट में? 4 इलेक्ट्रॉन्स. ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स रिजल्ट इज आयोनिक बॉन्ड बनता है. आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज वाटर इज डेंसर देन आइस, राइट? ये इसका आंसर है. ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता होता है अक्सर कि आइस जो है वो फ्लोट करती है वाटर पे, क्यों? उसकी रीजन पूछते हैं तो उसकी रीजन क्या है? वाटर इज डेंसर देन आइस, इसलिए. द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द टू नॉन मेटल इज एक्सपेक्टेड टू बी कोवेलेंट बॉन्ड एक्सपेक्टेड होता है टू नॉन मेटल के दरमियान. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट फोर्सेज अमंग द एटम? कोवेलेंट बॉन्ड की जो फोर्सेज है वो वीकेस्ट होती है. यूनिट नंबर 5 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर में से एमसीक्यूज कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट है? द चार्ल्स लॉ के इज इक्वल टू V over T, राइट? चार्ल्स लॉ में जो के है वो इसके इक्वल होता है V over T के. द वैल्यू ऑफ द एब्सोल्यूट जीरो इज -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड. वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज 760, राइट? द वेपर प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय increase of temperature है इसका आंसर. in the evaporation process liquid molecules which leave the surface of the liquid have very high energy. उनमें एनर्जी हाई होती है इसलिए वो लीव कर जाते हैं evaporation में. in 120/80 the 120 is the systolic pressure और जो 80 है वो diastolic pressure होता है. Boyle's law is presented in 1662. unit 6 in aqueous solution the solvent is water. Which of the following situation contain more water? 0.25 m. The color of the concentrated solution of potassium permanganate is dark purple होता है. 84 number है जी. molarity is the number of the moles of salts in 1 gm cube of the solution, right? और the volume is centimeter cube of solute in 100 gram of solution is called percentage V over M. Concentration is the ratio of solute to solution. The number of grams of solute dissolved in 100 gram of solution is called percentage M by M, right? How much sodium thiosulfate is needed to prepare the saturated solution in 100 centimeter cube of water at 20 degree centigrade? That is 20.9 gram. Unit number 7 electrochemistry में से what is the formula of rust? That is the formula of rust. Addition of oxygen during a chemical reaction is called oxidation. Pure water is an example of weak electrolyte. इसका ये आंसर है. which of the following is the weak electrolyte? That is, this is the weak electrolyte. in the redox reaction between Zn and HCl, the oxidizing agent is H plus, right? A species that reduces a substance by donating electron to it is called a reducing agent. Oxidation number of oxygen in OF2 is +2.
Oxidation number of nitrogen in HNO3 is +5, in which cell spontaneous reaction take place. Galvanic cell. The oxidation number of chromium in K2Cr2O7 is +6. Oxidation number of all elements in the free state is 0. Which of the following solution is a strong? तो इन सब में से जो है वो NaOH का solution जो है वो सबसे strong होता है. Oxidation number of hydrogen in metal hydride is -1. The oxidation number of chlorine in KClO3 is +5. Dash is the non-electrolyte, that is sugar solution. Which metal is used for galvanizing? Zn. The most common example of corrosion is, क्या इसका आंसर आएगा? Rusting of iron. Acetic acid is an example of weak electrolyte. Dash is a non-electrolyte, that is CH6. Depositing of one metal over the other by means of electrolysis is electroplating. Loss of electron from an atom is oxidation. Chapter number 8 से है chemical reactivity से. Which of the following is the lightest element? Lithium. Metals have generally low ionization energy value, which is less malleable. Iron. Metals react with oxygen to form basic oxide. Non-metals act as an oxidizing agent because they are more electronegative. Which of the following will not react with dilute HCl? That is C. Metals can form ions carrying charges. इसमें से ये भी है और ये भी है. So all of these आएगा. The most reactive metal is sodium. सबसे ज़्यादा most reactive होता है. Which of the following non-metal is lustrous? Iodine. The heaviest metal is osmium. The most abundant metal is aluminium. Which one of the following is most malleable? Gold. The non-metal which is present in group 15 of periodic table, that is phosphorus. 123 number है. The halogen which exists as the solid at room temperature is iodine. Non-metals are generally soft, but which of the following is extremely hard? नॉर्मली जो है वो नॉन मेटल होते हैं सॉफ्ट, बट लेकिन उसमें जो एक्सट्रीमली हार्ड होता है वो होता है डायमंड. राइट. तो ये थे एमसीक्यूज जो आप बच्चे तैयार कर लें तो आपके फुल मार्क्स इंशाल्लाह बोर्ड में आएंगे. और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम और दुआओं में याद रखिएगा. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज.